In this lecture, we will discuss about a new topic, that is respiration. Learning objectives are cellular respiration, types of respiration, and types of cellular respiration. Respiration means breakdown of complex carbon compounds and release of energy in the form of ATP. It means that respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और उस लार्ज मॉलिक्यूल में मौजूद एनर्जी को रिलीज करवा के स्टोर किया जाता है इन अनदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड एटीपी. एक्चुअली एनर्जी जो है, कोई भी हमने अगर वर्क करना है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म एवरी फंक्शन एंड ऑल लाइफ एक्टिविटीज. इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शंस हो रहे होते हैं, हालांकि एक्सटर्नली हम कोई काम नहीं कर रहे, हम रेस्ट कर रहे होते हैं, देन भी हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं दैट रिक्वायर एनर्जी. इट मीन्स दैट आवर बॉडी requires energy at every single second. So to meet that need of energy, we respire. So respiration, as you know that every living organisms require energy to perform every function. It means that they perform respiration because respiration is a universal process that every organism undergoes to meet its need of energy. Energy requirement को पूरा करने के लिए हर organism respiration perform करता है. So it occurs in every living organism. Prokaryotes, eukaryotes, plant, algae, fungi, animals, हर तरह के organism में respiration हो रही होती है. Now there are two types of respiration. External respiration. External respiration is also called organismic respiration because it occurs at organism level. External respiration में क्या होता है? It is basically taking in air into the body with the help of nostrils to get oxygen and giving out air to remove excess carbon dioxide. External respiration में air को nostrils और nose के through lungs में भेजा जाता है to get oxygen, and that oxygen become dissolved in our blood. And at the same time air को exhale किया जाता है body के बाहर to remove excess carbon dioxide. Excess carbon dioxide को remove करने के लिए. Taking in air is called inhalation, while giving out of air to remove excess carbon dioxide is called exhalation. Inhalation is also called inspiration, and exhalation is also called expiration. So this was external respiration, and it is comparatively simple than internal respiration. So the second type is internal respiration. This type of respiration is actually called cellular respiration because it occurs at cell level. And in cellular respiration, it involves the step-by-step breakdown of carbon chain molecule to release energy that is stored in carbon and carbon hydrogen bonds. And this energy is stored in the form of ATP. So this whole process is called internal respiration or cellular respiration. Next we will discuss about the types of cellular respiration. There are two types of cellular respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration involves the breakdown of glucose in the presence of oxygen. If glucose is broken down completely in the presence of oxygen, then it would be aerobic respiration. And in case of aerobic respiration, glucose undergoes complete breakdown. और ग्लूकोज की जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है तो इससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इट मीन्स दैट एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है तो एंड प्रोडक्ट्स जो है वो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होते हैं. while in case of anaerobic respiration, glucose also undergoes breakdown
But this breakdown occurs in the absence of oxygen. And when oxygen is not present while breaking down glucose, it does not undergo complete breakdown. इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती है. इट मीन्स दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन में मुकम्मल तौर पे जो मॉलिक्यूल में स्टोर्ड एनर्जी है उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता एटीपी में. इट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. Glucose. Glucose is called respiratory fuel of the cell. रेस्पिरेशन के लिए जो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, जो इनिशियल मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, दैट इज ग्लूकोज. सो इट मीन्स दैट ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी. इससे ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जरूरी है. So breakdown of glucose releases energy and this process is generally called glycolysis. Glycolysis is the breakdown of glucose. Now you know that glucose is C6H12O6. It is broken down into two molecules of a 3-carbon compound named as pyruvic acid with the release of energy. And during this process, a coenzyme named as nicotine amide adenine dinucleotide. Nicotine amide adenine dinucleotide. It is a basically coenzyme. It is reduced into NADH2. During this breakdown of glucose into two molecules of pyruvic acid, the 4 hydrogen from this glucose molecule are used to reduce two molecules of coenzyme NAD into two molecules of NADH2. As you can see that this breakdown does not require oxygen. इस breakdown के लिए oxygen ज़रूरी नहीं है. It means that it occurs in both types of respiration, aerobic as well as anaerobic respiration. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप सेम होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में और फिर इन पायरोविक एसिड्स को आगे फर्दर इनकी ब्रेकडाउन की जाती है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है. लेकिन ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के ऊपर. अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है तो नेक्स्ट पायरोविक एसिड को फर्दर एरोबिकली ब्रेकडाउन किया जाती है इसकी. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनारोबिकली पायरोविक एसिड से एनर्जी हासिल की जाती है. Therefore, glycolysis is believed to occur in all types of organisms. और इसका एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि फर्स्ट identical reaction that may have occurred in the first cell was also similar to glycolysis. But the further breakdown depends upon oxygen availability. Now we will discuss about the types of anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a respiration in which glucose is broken down in the absence of oxygen. There are two types of aerobic respiration. First type is, these types are on the basis of nature of final product. फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसकी नेचर के ऊपर इसकी 2 टाइप्स हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉमनली कॉल्ड एज fermentation. So there are 2 types of fermentation. The first type is alcoholic fermentation. जैसे कि हमने पहले बात की कि ये नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट की बेस पे इनकी नेम है. इट मीन्स दैट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल होगी. दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन occurs in yeast and yeast is basically a fungi. It is followed by
ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है। इट मीन्स दैट इसका रिएक्टेंट क्या होगा, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होगा, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है पायरोविक एसिड। इट मीन्स दैट पायरोविक एसिड इज द रिएक्टेंट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक्चुअली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड अंडरगोज decarboxylation, and decarboxylation means removal of carbon dioxide. And when pyruvic acid is decarboxylized, it produces acetaldehyde, and this acetaldehyde then undergoes reduction. Reduction means addition of electron or addition of hydrogen ions, and these hydrogen ions are provided by a reducing power named as NADH2, that is oxidized into NAD positive. Here is the process of alcoholic fermentation. You can see that in this type, glucose molecule is first converted into two molecules of pyruvic acid with the help of glycolysis, and during this glycolysis, NAD positive is converted into 2 NADH along with the formation of 2 ATPs. From this step, alcoholic fermentation starts. Two molecules of pyruvate undergo decarboxylation, means removal of carbon dioxide, and two molecules of carbon dioxide from each molecule of pyruvate is released, and two molecules of acetaldehydes are formed. Next, these two molecules of acetaldehyde undergo reduction, and for this reduction the hydrogen ions are provided with the help of 2 NADH that are converted into NAD positive, and these two hydrogen ions are taken up by this acetaldehyde and it is converted into two molecules of ethanol, and ethanol is basically a alcohol. So you can see that the final product is an alcohol, that is why it is called alcoholic fermentation. ये इसकी सिंपल इक्वेशन है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दो NAD पॉजिटिव इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जिससे दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं पायरोविक एसिड के और दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं NADH के, साथ में दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन आयन नेक्स्ट पायरोविक एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं अल्कोहल के, दो कार्बन डाइऑक्साइड के और दो NAD पॉजिटिव। इट मीन्स दैट यहाँ पे रिडक्शन होती है एसिटाल्डिहाइड की, डीकार्बोक्सिलेशन होती है पायरोविक एसिड की, ऑक्सीडेशन होती है NADH की. This type of fermentation is used in brewing industry. Next type is lactic acid fermentation. This type of fermentation occurs in anaerobic bacteria. Primitive जो organisms थे उनमें ये lactic acid fermentation होती थी, और बहुत से mammalian organisms में भी ये टाइप मौजूद है, जैसा कि ह्यूमन के मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है उस वक्त रेस्पिरेशन एरोबिक से एनारोबिकली शिफ्ट हो जाती है, और वो भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है. सो इट अकर्स इन ह्यूमन मसल सेल्स ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज when oxygen is not present or oxygen supply is in shortage. In some time लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन जब मसल्स में बढ़ जाती है, इससे मसल पीएच चेंज हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से मसल फटीग पैदा होती हैं एंड मसल्स बिकम अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बिगिन टू एच. इन दिस टाइप पहले ग्लूकोज
कि ब्रेक डाउन की जाती है with the help of glycolysis into two molecules of pyruvic acid along with the formation of NADH. And then pyruvic acid को convert किया जाता है with the help of lactic acid fermentation into lactic acid along with the formation of energy. And these NADH molecules are oxidized into NAD positive and they provide hydrogen ions to lactic acid. You can see that glucose undergoes glycolysis with the production of two ATP molecules and two molecules of NADH from two molecules of NAD positive and two molecules of pyruvic acids pyruvates are produced. Then these two molecules of pyruvate undergo reduction and get hydrogen ion from NADH and produce two molecules of lactate. As the end product of this reaction is lactate, that is why it is called lactic acid fermentation. This is the equation in which glucose molecule and two NAD positive coenzymes are involved. They are converted into two molecules of pyruvate with two molecules of NADH. And then these two molecules of NADH and pyruvate undergo lactic acid fermentation. They produce two molecules of lactic acid and two molecules of NAD positive. Anaerobic respiration releases only 2% energy that is present in glucose molecule. That is why mostly organisms rely करते हैं aerobic respiration के ऊपर for the production of large amount of energy to carry out their life activities.